Carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals are components of food. These components of food are called nutrients and necessary for our body. Nutrition is the mode of taking food by an organism, its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self and trophos means nourishment. देखो auto का मतलब self होता है और trophos का मतलब होता है nourishment. Trophos का मतलब होता है nourishment, nutrition. Therefore, plants are autotrophs. Animals and plants, other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero matlab other, tropos means nutrition. Leaves are the food factories of plants. Plants के food factories होते हैं leaves. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present in the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cells. Such pores are called stomata. Cells. You have seen that buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living cells are made up of tiny units are called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made only of one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. अब देखो एक क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल. Present in human beings but lack nucleus. Of course, it's RBC. Has a very large vacuole. Has a very large vacuole. It will be onion pill. हाँ, cell of the onion pill. Has no cell wall. Animal cell नहीं, chick cell हो जाएगा, ये chick cell है. Bean shaped is guard cell. Tube like xylem. हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ द लैंग्वेजेस दे आर गिवन. नर्व सेल में आपका हो जाएगा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड यस. आरबीसीज आर लाइक डिस्क शेप. White blood cells are changing shapes. Muscle cells are long and thin, and skin cells are the flat shape. स्किन है, स्किनी लोग कैसे होते हैं, थिन होते हैं. जो स्किनी लोग होते हैं, जो दुबले पतले लोग होते हैं, वो थिन होते हैं. तो थिन फ्लैट शेप से ध्यान रखना, फ्लैट शेप. ये देखो आरबीसीज, कैसे हो रहे हैं, राउंड एंड बाई कॉन्केव शेप इनका. राउंड एंड बाई कॉन्केव, जो कॉन्केव लेंस होते हैं वो भी इससे आप रिलेट कर सकते हो. आरबीसीज राउंड होते हैं और बाई कॉन्केव शेप का होता है. वाइट ब्लड सेल्स और अमीबॉइड सेल्स में भी चेंज होते रहते हैं. कॉलमनर एपिथेलियल सेल. स्किन सेल्स आपकी फ्लैट होती है. ट्रैकिड हो गया, ये लॉन्ग एंड नैरो. नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड हो गया. और मीजोफाइल सेल ये हो गया. इसका ध्यान रखना, बाई कॉन्केव एंड राउंड आपकी रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अमीबाइड मतलब चेंज होते रहते, वो हो जाएगी आपकी वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है कि उनकी ऐसे सेल्स जो चेंज होती रहती है, इसलिए उनको अमीबॉइड भी कहते हैं. आरबीसीज जो जनरली होती है वो आरबीसीज ना आपकी बाई कॉन्केव होते हैं और कुछ डिस्क शेप के होते हैं. बाई कॉन्केव भी आरबीसीज में ही आएगा, ठीक है. स्किन सेल्स आपके होते हैं फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट से ध्यान रख लेना. मसल सेल्स जो होती है आपकी कैसी होती है, लॉन्ग एंड थिन होती है. Out of the different combinations of terms given below, the correct combination of terms with reference to animal cell will be cell membrane, chromosome, ribosome and mitochondria. क्योंकि सेल वॉल तो प्रेजेंट होती नहीं है सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड भी नहीं होंगी, तो उस बेसिस में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होंगी. उस बेसिस में आपका ऑप्शन सी सही रहेगा. और ये आपको ध्यान रखना, आरबीसी बाइकॉन के वो राउंड शेप हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप हो जाएगा, स्किन सेल्स आपकी फ्लैट हो जाएगी, कॉलमनर एपिथेलियल लॉन्ग एंड नैरो, मीजोफाइल सेल्स आपके राउंड एंड ओवल होते हैं, और ट्रैकेट्स जो है आपके जाइलम के जो ट्रैकेट्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है. मीजोफाइल आपके राउंड एंड ओवल हो जाएंगे. इधर पार्ट्स ऑफ सेल्स की अगर बात करें, साइटोप्लाज्म which is not the function of the nucleus in the cell to transfer the traits of the parents. of course ये जो फंक्शन नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, प्रोटीन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, क्रोमोसोम्स एंड जीन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर. वैक्यूल में नहीं होगा, बाकी एबीसी आपका करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग statement about the cell of living organisms is correct.
ऑल आर माइक्रोस्कोपिक कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, सही है। ऑल हैव अ सेल वॉल, ये गलत है क्योंकि ये सब में सेल वॉल नहीं होती। स्टिक सेल्स अभी देखे हमने, एनिमल सेल्स देखे हमने। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। मुझे ये क्वेश्चन का आंसर केवल डी सही लग रहा है ना, ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, मतलब आपको करेक्ट चूज करना है। यहाँ पे केवल डी बता रहे हैं क्योंकि सारे माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। जो आपका ऑस्ट्रिच का एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो एक सेल है, सबसे बड़ी सेल है, हम इसको देख सकते हैं। ऑल हैव अ सेल वॉल, ये तो गलत ही है। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वायरस में भी नहीं होता है, वायरोइड है वायरस में। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from the carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, is called photosynthesis. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts, in green stems, green branches. The desert plants have scales or spines leaves to reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out the photosynthesis. The desert plants have the scales or spines like leaves to reduce the water loss by transpiration. Scales होती है. The leaves other than green also have a chlorophyll. The large amount of red, brown, other pigments mask the green color. Photosynthesis takes also place in these leaves. Okay. Recall that nitrogen is present in abundance in a gaseous form in the air. However, plants cannot absorb the nitrogen in the skin form. Soil has a certain bacteria that converts gaseous nitrogen into the usable release into the soil. Other methods of nutrition in the plants is like humans, other animals. These plants also depend on the food produced by the plants on the nutrition. They use heterotrophic system. Amarbel is a plant. It doesn't contain chlorophyll. They get their food from the plant on which they are mounted. The plant on which they are mounted is called host. Because plants like amarnath deprive the host of valuable nutrients, they are called parasites. Such plants may be green or some other color. Look at the plant. The pitcher or jug like structure is modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hair directed outward. X is a plant which is an autotroph as well as heterotroph. What X could be? It's a pitcher autotroph or heterotroph दोनों हो सकता. What is the answer? Pitcher plant. Pitcher plant. ऑटोट्रॉपी है, हेटरोट्रॉपी. आपकी एग्जांपल में एल्गी भी, एल्गी खुद का खाना बना लेता है. कैस्केट आपका पैरासाइट हो जाएगा. और फंजाई आपका क्लोरोफिल होता ही नहीं. फंजाई में तो फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता.